Hello friends, चलो स्टार्ट करिबा पेपर 1 एनालिसिस ऑफ एएसओ एग्जाम 2022 मो बुकलेट सीरीज नंबर डी रो पेपर एनालिसिस करिबे ता अनुसार आपण क्वेश्चन देखि देबे आपण जो भी सेट आपण घर थिबो से अनुसार क्वेश्चन नंबरिंग हेतिबो डिफरेंट सेट रो डिफरेंट नंबरिंग थाए तो से अनुसार आपण को क्वेश्चन टे कोठी अछि ताको देखि के एनालाइज करिवे। फर्स्ट क्वेश्चन टे होची which country hosted the fifth summit meeting of BIMSTEC in virtual mode in March 2022? यार ऑप्शन ए इंडिया, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और डी म्यांमार रही। यार करेक्ट आंसर हम बी श्रीलंका। मु जो भी क्वेश्चन गुड़ाक पढ़ुचे जो थर भी किसी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन को भी क्वेश्चन रिलेटेड थी कि सठिक आंसर प्रूफ किसी भी थी स्क्रीनशॉट थी कि गूगल सर्च थी ताको आम आपको स्क्रीन रे देखेबू अनुसार आप जापर कि आंसर टी ठीक अच्छे कि नहीं। Question number 2 होची which among the following countries was elected to the UN Security Council as a non-permanent member in June 2022? Option A Mozambique, B South Korea, C Canada, D Peru. यारो सठिक आंसर हबो A Mozambique. Question number 3 होची how many years does a non-permanent member serve in the UN Security Council? यार ऑप्शन A होची 1 year, B होची 2 year, C 3 year, D 5 years. यार करेक्ट आंसर हबो B 2 years. Question number 4 होची which organization vision is to enable one world, one sun, one grid? Option A होची Ministry of New and Renewable Energy, B Power Grid Corporation of India, C International Solar Alliance एवं D International Intergovernmental Panel on Climate Change. यार करेक्ट आंसर हबो International Solar Alliance. Question number 5 होची with which is the principle of common but differentiated responsibility associated? Option A होची Paris Agreement on Climate Change, B होची Big Summit 2022, C होची NATO, D International Solar Alliance. यार करेक्ट आंसर हबो A Paris Agreement on Climate Change. Question number 6 होची which one of the following options are not correctly matched with respect to the name of plates and type of plate boundary? Option A होची the North American plate and Eurasian plates are diverging plates, the Nazca plate and South American plates are diverging plates, C होची the Nazca plate and Pacific plates are exhibiting diverging plate boundary, एवं D होची India Australia plate and Eurasian plate are converging plates. यार करेक्ट आंसर हबो B the Nazca plate and South American plates are diverging plates जोटा कि करेक्टली मैच करूनी। यार सठिक आंसर आपण देखि परिबे स्क्रीन रे। 7 होची which one of the following ocean current is found in southern hemisphere? A Oasia current, B west wind drift, C Gulf stream, D Canaries current. यार करेक्ट आंसर हबो B west wind drift. 8 होची which one of the following is not correctly matched? A prairies North America, B pampas North America, C veldt South Africa एवं D steppes European Russia. एगुड़ाक ग्रासलैंड गुड़ाकर ना देइछे एवं सेटा कोठी सिचुएटेड सेटा को फाइंड करके आपण जोटा करेक्टली मैच करूनी सेटा हबो आंसर। यार आंसर हबो बी पैम्पस नॉर्थ अमेरिका जोटा कि इनकरेक्ट अछि। पैम्पस ग्रासलैंड रे रहिছে अर्जेंटीना रे। क्वेश्चन नंबर 9 होची match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. list 1 रे type of mountain रहिছে, list 2 रे example रहिছে। तो A रहिছে type list 1 रो block mountain, B cold folded mountain, C relic mountain एवं D young folded mountain. list 2 example रहिছে 1 Himalaya, 2 black forest, 3 Scottish Highlands एवं 4 Appalachian. तो कोड गुड़ाक रही ए बी सी डी ऑप्शन मु पढ़ी। ए रे रही A3 B1 C2 D4, बी रे रही A3 B1 C4 D2, सी रे रही A2 B4 C3 D1 एवं डी रे रही A2 B4 C1 D3। यार करेक्ट ऑप्शन हम C A2 B4 C3 D1। जदि आप भी जानीदेवे कि हिमालयसटा को टाइप ऑफ माउंटेन
जोटा कि हूँ करेक्ट यंग फोल्डेड माउंटेन हिमालय हूँ यंग फोल्डेड माउंटेन जदि ये ऑप्शन टी भी आप जदि जानी तो बाकी आंसर आपको खोजा दरकार नहीं कारण D1 केवल सी ऑप्शन रही तो आपण ये क्वेश्चन आंसर दे पारे। क्वेश्चन नंबर 10 होची which one of the following regions has the largest number of active volcanoes। यार ऑप्शन ए होची अलास्का, बी एल्यूटियन आइलैंड, सी हवाई आइलैंड्स एवं डी आइसलैंड। यार करेक्ट आंसर हम एल्यूटियन आइलैंड्स जोड़ा कि अलास्का यूएसए रे अवस्थित। क्वेश्चन 11 होची which one of the following rivers has a part foot delta। ए डानुबे, बी मिसिसिपी, सी नाइजर, डी नाइल। यार करेक्ट आंसर हम बी मिसिसिपी रिवर। 12 hobo, which one of the following is not correctly matched। A Khamsin North Africa and Arabia, B Bora Adriatic coast, C Mistral France एवं D Samu America। एगुड़ाक जो ना गुड़ाक आप देखुं से विंड टाइप डिफरेंट विंड टाइप को एरिया रे को विंड टाइप अच्छे सेटा कोडा करेक्टली मैच करूनी से भीतर सेटा होचे हमर आंसर। यार करेक्ट आंसर हम डी सामू अमेरिका। सामू जो विंड टाइप के रही है इजिप्ट रे फ्लो हुए। क्वेश्चन नंबर 13 होची मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 रे रही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गुड़ाकर ना, लिस्ट 2 रे होची रीजन एंड कंट्री रो ना। ताको देखि आपण मैच करके करेक्ट ऑप्शन आंसर हो करिवे। लिस्ट 1 रे रही ट्रॉपिकल साइक्लोन रे ए बाइजियो, बी साइक्लोन, सी हुरिकेन एवं डी टाइफून। लिस्ट 2 रीजन एवं कंट्री रे रही 1 चाइना, 2 फिलिपीन्स, 3 माडागास्कर एवं 4 यूएसए। कोड गुड़िक हूँ ए बी सी डी एवं ऑप्शन गुड़ाक पड़ुछि ए रे रही A2 B3 C1 D4, बी रे रही A2 B3 C4 D1, सी रे रही A3 B4 C1 D2 एवं डी रे रही A3 B4 C2 D1। यार करेक्ट ऑप्शन हम बी A2 B3 C4 एवं D1। या रिलेटेड इनफॉरमेशन आपन को स्क्रीन रे देखा जाउछे सेही तो आपन एनालाइज करेबे कि आपन को क्वेश्चन ठीक अछि कि नहीं। होची मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 रे रही कोपेन सिंबल एवं लिस्ट 2 रे रही क्लाइमेट। कोपेन सिंबल रो लिस्ट पड़ुची ए रही BWK, बी रही BWH, सी रही BSS एवं डी रही BSK। क्लाइमेट रो लिस्ट पड़ुची 1 रही कोल्ड मिड लैटिट्यूड स्टेप, 2 रही हॉट मिड लैटिट्यूड स्टेप, 3 रही हॉट लो लैटिट्यूड डेजर्ट एवं 4 रही कोल्ड लो लैटिट्यूड डेजर्ट। कोड गुड़ाक हूँ ABCD ऑप्शन रही ए ऑप्शन रही A4 B3 C2 D1, बी रे रही A4 B2 C3 D1, सी रे रही A1 B3 C2 D4 एवं डी रे रही A1 B2 C3 D4। यार करेक्ट ऑप्शन हम A4 B3 C2 D1। डिफरेंट कोपेन सिंबल्स जोटा कि डिफरेंट क्लाइमेट को रिलेट करुच्ची सेटा आपण स्क्रीन रे देखि परिबे कि को कोपेन सिंबल को क्लाइमेट को डिनोट करे। क्वेश्चन नंबर 15 द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज फाउंड इन द डैश। ऑप्शन ए आर्कटिक ओशन, बी अटलांटिक ओशन, सी इंडियन ओशन, डी पैसिफिक ओशन। यार करेक्ट आंसर हम ए आर्कटिक ओशन। शेल्फ वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ माने आउ सेटा कोठी देखा जाए सेटा तार आंसर स्क्रीनशॉट रे हमें स्क्रीन रे आपन को देखौछु। 16 होची which one of the following geosynclines is the oldest। A Delhi geosyncline, B Dharavar geosyncline, C Eastern Ghat geosyncline एवं D सतपुरा geosyncline। यार करेक्ट आंसर हम B Dharavar geosyncline जोड़ा कि सबटू ओल्डेस्ट। 17 होची which one of the following rivers does not originate from the Maikal Ridge। A तापी, B सोन, C नर्मदा, D महानदी। यार करेक्ट आंसर हम डी महानदी जोटा कि ओरिजिनेट करुची सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़ रो। तापी, सोन, नर्मदा ये तीनोटी जाक मैकल रेंज रो बाहरी चलती। मैकल रेंज होची सतपुरा रेंज रो गोटे अंश।
Question 18 होची which category of the following forests occupy the largest percentage in India? A. Conifers and pines. B. Equatorial evergreen. C. Tropical deciduous and D. Desert vegetation. यार correct answer हबो C. Tropical deciduous. Question 19 होची consider the following statements and select the correct answer using the code given below. Option 1 रहिची Option 1 रहिची The Gujarat Plain was formed by the depositional work of parallel consequent rivers. 2. The Gujarat Plain contains the Cretaceous lava formation. Code गुड़ा कह दो कि A. Only 1 is correct. B. Only 2 is correct. C. Both 1 and 2 are correct. एवं D. Neither 1 or nor 2 is correct. यार correct answer हुआ both 1 and 2 are correct. यार related information आमे अपन को screen रे देखो चु अपन देखी पारिबे. Question 20 होची who among the following scholars did not delineate the climatic regions of India? Option A. Blandford H.E. B. Kupak J. C. Spade O.H.K. एवं D. Singh R.L. यार correct answer हबो B. Kupak J. अन्य तीन जनों स्कॉलर माने क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया रे किछि ना किछि पार्टिसिपेट करिसंती डिसाइड करियो. Question 21 होची arrange the rivers in ascending orders of their contribution to the formation of coastal plains. Option A. The Mahanadi greater than the Brahmani, greater than the Vaitarani, greater than Rushikulya, greater than Subarnarekha. Option B. The Mahanadi greater than the Vaitarani, greater than the Brahmani, greater than the Subarnarekha, greater than the Rushikulya. C. The Mahanadi greater than the Rushikulya, greater than the Brahmani, greater than the Vaitarani, greater than the Subarnarekha. D. The Mahanadi greater than the Brahmani, greater than the Vaitarani, greater than the Subarnarekha, greater than the Rushikulya. यार correct answer हबो option A. The Mahanadi is greater than the Brahmani, greater than the Vaitarani, greater than the Rushikulya एवं greater than the Subarnarekha. एथिरे आमे नदी गुडाकर प्रेजेंस जहाँ ओडिसा रे रहिछि कोस्टल प्लेन्स रे ताको देखि कि ए ऑप्शन टी करेक्ट बोली धरछु. आपण देखि परिबे महानदी रो लेंथ होछि 494 किलोमीटर ओडिसा रे, ब्राह्मणी रो 461 किलोमीटर ओडिसा रे रहिछि, बैतरणी रो 360 किलोमीटर ओडिसा रे रहिछि, ऋषिकुल्या रो 175 किलोमीटर ओडिसा रे रहिछि एवं सुवर्णरेखा रो 81 किलोमीटर ओडिसा रे रहिछि. सुवर्णरेखा ऋषिकुल्या ठू लेंथ वाइज बड़ ही पारे किंतु सुवर्णरेखा रो जेहेतु ओनली 81 किलोमीटर ओडिसा रे सिचुएटेड तो तारो सेटा ऋषिकुल्या ठू कम नेरो रहिबो ओडिसा रे तारो प्रेजेंस सेति पे सेटा सबठू कम कंट्रीब्यूशन करिबो कोस्टल प्लेन्स इन ओडिसा. Question 22 रहिछि मैच द morphological units of rolling uplands list 1 with correct river basin list 2. list 1 रे हमर morphological units कोडा कर रहिछि एवं list 2 रे basin associated रहिछि. list 1 होछि A the Rajgangpur Panposh uplands, B the Jharsuguda uplands, C the Balangir Titlagarh Patnagarh uplands एवं D the Malkanagiri uplands. basin associated list होछि 1 Ib basin, 2 North Dale basin, 3 the Sabari basin, 4 Koil the Sank rivers, Koil and the Sank rivers. code कोडा का होछि option A A4 B1 C2 D3, B A1 B2 C3 D4, C A3 B2 C1 D4 एवं D A2 B3 C1 D4. यार करेक्ट ऑप्शन हबो A A4 B1 C2 D3. 23 number question होछि Rangamati and Rugudia soil belongs to which primary soil group in Odisha? Option A regular soil, B laterite soil, C the brown forest earth, D yellow earth. यार आंसर होछि option B laterite soil. 24 which of the following factor is responsible for fluctuation in monsoon in India? Option A if second equatorial trough does not merge with ITCZ, B southern branch of southwest tropical jet re-establish over northern India, C let disappearance of southern branch of subtropical westerly jet stream from northern India एवं D development of strong low pressure cell over Tibetan landmass. यार correct option हबो development of strong low pressure cell over Tibetan landmass. सबु गुडे का फैक्टर किछि ना किछि रेस्पोंसिबल अछंती मानसून पे इंडिया रे किंतु
से पचार रेस्पॉन्सिबल फ्लक्चुएशन इन मॉनसून इन इंडिया तो यहाँ सब स्ट्रॉन्ग रीजन मॉनसून फ्लक्चुएशन पाई 25. Among the following options, which mountain pass does not belong to the correct state? Option A, Baralacha Pass, Himachal Pradesh. B, Manna Pass, Uttarakhand. C, Jalapla, Arunachal Pradesh. D, Nathula, Sikkim. यार करेक्ट आंसर हम जेलेप्ला अरुणाचल प्रदेश जोटा कि गोटे इनकरेक्ट मैच जेलेप्ला पास रही सिक्किम रे 26 द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी INDU is located at option A Dehradun, B New Delhi, C Binola Village Haryana, D Chennai. यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन C Binola Village Haryana 27 the present chief of air staff of India is Option A M Naravane, B VR Chaudhary, C Bipin Rawat, D Hari Kumar. यार करेक्ट ऑप्शन हम B VR Chaudhary. विवेक राम चौधरी होचंती चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया 28 Quad comprises of the following countries. Option A USA, UK, Japan and India. B Russia, UK, France, India and Australia. C USA, India, Japan and Australia. D UK, Japan, India and Australia. यार करेक्ट ऑप्शन हम C USA, India, Japan and Australia. या रिलेटेड इंफॉर्मेशन आम आपण को स्क्रीन रे देखो 29 Who is known as the missile woman of India? Option A Dr. Tessie Thomas, B Indira Gandhi, C Kunjan Saxena, D Mary Kom. करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए डॉक्टर टेसी थॉमस जे की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे अपनी 4 मिसाइल लॉन्च रे 30 On 20 January 2022 which helicopter was officially inducted into Indian naval ship INS Utkarsh at Port Blair? Option A ALH MK3, B Mi-24, C CH-47 Chinook एवं D AH-64 Apache. यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए ALH MK3 31 The only Air Force officer to have received the Paramveer Chakra is Option A Air Comrade Ravish Malhotra, B Flying Officer Nirmanjit Singh Sekhon, C Squadron Leader Abhinandan Vartaman, D Wing Commander Rakesh Sharma. यार करेक्ट ऑप्शन हम B Flying Officer Nirmanjit Singh Sekhon जे की द ओनली एयरफोर्स ऑफिसर जहाँ को के परमवीर चक्र मिलता 32 द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज प्रोक्योर्ड बाय इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए फ्रांस, बी रशिया, सी USA, डी इसराइल. यार करेक्ट आंसर हम बी रशिया 33 इन ए बूस्ट टू आत्मनिर्भर भारत विच एयरक्राफ्ट इज was given acceptance of necessity by the Defence Acquisition Council in June 2022 to be manufactured by HAL. Option A Rafale, B Mirage 2000, C Dornier, D Su-30 व Sukhoi 30. यार करेक्ट आंसर हमको दीटा जगह मिलुची कि डॉर्नियर एवं बोथ डॉर्नियर एंड Su-30 दीटा जगह एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलता डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल रो जून 2022 रे. यार करेक्ट आंसर दीटा जगह हम बोले लगुचे किंतु देखा जाओ UPSC तार आंसर कौन दूचे 34 in January 2022 the Border Roads Organization carried out the final blast on Sela Tunnel. The tunnel is located in option A Meghalaya, B Manipur, C Ladakh, D Arunachal Pradesh. यार करेक्ट ऑप्शन हम डी अरुणाचल प्रदेश रे रही सेला टनल 35 द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ ए स्क्वाड्रन लीडर इन आर्मी इज ए मेजर, बी ब्रिगेडियर, सी कैप्टन, डी सूबेदार मेजर. यार करेक्ट आंसर हम ए मेजर रैंक इज इक्विवेलेंट टू स्क्वाड्रन लीडर इन आर्मी. एयरफोर्स रे जोटा स्क्वाड्रन लीडर रैंक रही सेटा आर्मी रे मेजर रैंक रहिबो एवं नेवी रे लेफ्टिनेंट कमांडर कर रैंक रहिबो. 36 who were awarded Nobel Prize in Chemistry in 2019 for developing lithium ion batteries? Option A Benjamin List and David Macmillan, B Emmanuel Charpentier and Jennifer A. Doudna, C Roger Penrose, Leonard
General and Adriaques. Option D, John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham, and Akira Yoshino. Your correct answer about option D, John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham, and Akira Yoshino, जे कि 2019 रे पाइथिले नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग लिथियम आयन बैटरीज हमर जो मैंने भी एस एग्जाम कोर्स नहीं चलते से जनकर डाउट थिला आमे जेहेतु 2 वर्षर सब जनरल नॉलेज रिलेटेड जनरल अवेयरनेस रिलेटेड इनफॉरमेशन गुड़ाक प्रोवाइड करूँ आम कोर्स रे बहुत जनकर क्वेश्चन थिला कि जेहेतु यहाँ जीके केवल रिसेंट इवेंट्स को लेकिन पचरा जाए आ बहुत पुराना इवेंट्स रू जीके आसेनी एग्जाम गुड़िक तो यहाँ आप देखु 2022 रे क्वेश्चन पचरा जाइए 2019 नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री रो तो निहाती भाव आपन को मन रखा पड़ो 2-3 वर्ष रिसेंट जहाँ भी किसी अवार्ड्स हो ऑनर्स हो किसी भी जोटा कि बहुत ही ड्रास्टिक इनफॉरमेशन गुड़ाक रही से गुड़ाक आपको मन रखा पड़ो से 2-3 वर्ष पुराना है 37. Which recent online campaign led to declaration of Jaipur rainforest as national park in Assam? Option A, Siang Bachao Andolan, B, Takam Machine Porin Kebang, C, Save Dihang Patkai, D, none of this. यार आंसर हम Save Dihang Patkai जोड़ा कि गोटे इंस्टाग्राम रे गोटे कैंपेन स्टार्ट करा जाइथिला जयपुर रेन फॉरेस्ट पाई तापरे ए रेन फॉरेस्ट को नेशनल पार्क रो मान्यता मिलथिला 38 which of the following is not a greenhouse gas option A O3 B N2O C NO2 D CFC यार करेक्ट आंसर हम C NO2 स्क्रीन रे आपण देखि पारथे को गुडा का ग्रीन हाउस गैसेस जोड़ा भीतर इंक्लूड रहउची O3 N2O एवं CFCs NO2 टी इंक्लूडेड नहीं ग्रीन हाउस गैस मध्य रे 39 who developed the concept of hotspots option A Stuart L Pym B Edward J Laurent C John Muir D Norman Myers here correct answer about D Norman Myers 40 what are parasite photosynthetic plants called option A semi-parasites B hemiparasites C microparasites D holoparasites यार करेक्ट ऑप्शन हम D holoparasites holoparasites कहा को कहती आम आपण को देखो तार इनफॉरमेशन 41 how frequently pollutants are being monitored under National Air Quality Monitoring Program NAM option A once in a week B twice in a week C alternative days D once in a fortnight यार आंसर हम B twice in a week 42 what is the total species diversity across all communities within a geographic area called option A alpha university B beta university C gamma university D delta university यार क्वेश्चन आंसर हम C gamma university 43 which is the world's largest solar park A Benban solar park Egypt B Butler solar park India C Huanghe hydropower Hainan solar park China D Noor Abu Dhabi UAE यार करेक्ट ऑप्शन हम बी भाटला सोलर पार्क इंडिया 44 व्हाट इज द मॉडलिंग अप्रोच फॉर इवैल्यूएटिंग what is the modeling approach for evaluating the response of individual species to climate change called option A zero dimension model B box model C general circulation model D bioclimatic envelope model their answer hobo option D bioclimatic envelope model 45 which of the following have high assimilation efficiency of over 90% option A secondary carnivores B herbivores C predatory riders D social insects यार सटीक आंसर होबो secondary carnivores A 46 in the guidelines announced by Union Finance Minister in 2022-2023 budget instead of using the term cryptocurrency the term dash is used option A bitcoin assets B ethercoins assets C altcoin assets D virtual digital assets यार correct option होबो D virtual digital assets
47. Which state in India presented child budget as part of the annual state budget? Option A Andhra Pradesh, B Gujarat, C Sikkim, D Madhya Pradesh. Here correct option hobo D Madhya Pradesh. 48. The Government of India announced its decision to convert 150 villages into villages of excellence with technical assistance from Dash. Option A Japan, B Israel, C USA, D Netherlands. Here correct option hobo B Israel. 49. Which one of the following is not the objective of Operation Sajjang launched by Delhi Police? Option A to curb area domination exercise, B keeping tab on criminals, C intensive checking at pickets, D special rewards to traffic friendly drivers. Here option hobo D special rewards to traffic friendly drivers is the correct answer. 50. The GSI has approved the setting up of country's first geological park at Dash. Option A Lamheta Jabalpur, B Kadagu Karnataka, C Idukki Kerala, D Talalagir Gujarat. Your correct option hobo A Lamheta Jabalpur. 51. Match the following. 1 hochi Meghalaya, 2 Mizoram, 3 Manipur, 4 Tripura. ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି 1 ହୋଜାଗିରି, 2 ବାଂଲା ଡାନ୍ସ, 3 ବାମ୍ବୁ ଡାନ୍ସ, 4 ଥାଙ୍ଗଟା। ଏ ଦୁଇଟା ଲିଷ୍ଟକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ଅଛି। କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ୁଛି A 1 2 2 3 3 4 4 1, B 1 3 2 1 3 2 4 4, C 1 2 2 1 3 3 4 4, D 1 3 2 4 3 1 4 4. Your correct option hobo A 1 2 2 3 3 4 4 1. 52. The Central Board of Secondary Education has introduced data science subject as a subject for its students of 8 to 12 class in collaboration with company dash. Option A Inter, B Dell, C Microsoft, D Infosys. Our correct answer hobo C Microsoft. 53. Which of the following statement Which of the following statements are not correct? A. Recently, the Ministry of Earth Sciences has launched the Deep Ocean Mission. B. This mission project mode is to support the green economy initiative of Government of India. C. This project is aimed to study biodiversity, the impact of climate change, etc. D. In 2022, India signed a contract with International Seaboard Authority. Your correct answer hobo B. This mission mode project is to support the green economy initiative of Government of India. 54. Digital India Bhashini is dash. Which one of the above is not correct? एटा ए जो क्वेश्चन पूरा क्वेश्चनटा पढ़िया पे आपको ऑप्शन पर भी पढ़िया पड़ो जो थे देछि कि विच वन ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट जदि क्वेश्चन टी पूरा न पढ़े आप ऑप्शन आंसर देथिबे तो निहाती भूल होबार चांसेस अच्छे। ऑप्शन ए रही इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड language translation platform. B. It gives access to global content in their own languages. C. It is a step to realize digital photography. And D. It promotes digital India vision. Your correct answer hobo it is a step to realize digital photography जोटा कि होछि wrong. Incorrect. 55. The theme of Earth Day 2022 is dash. A होछि nurture the nature. B. Go green save green. C. Save the earth, save the future. And D. Invest in our planet. Your correct answer होबो D. Invest in our planet. सबु थीम गुड़ाक डिफरेंट डेज रो ईयर अनुजाई मंथ अनुजाई जहाँ भी सेटा जी आमर एसओ रो कोर्स नहीं थिले से रिलेटेड गोटे पीडीएफ दिया जाइथिला जो ए सब मेंशन अच्छी कि को डे को मंथ रे को डेट रे आसे एवं तार थीम कौन रही लास्ट ईयर पर। 56. Which of the following statement is not correct? 1. The Chang'e 5 lunar spacecraft mission is undertaken by China. 2. It found water at its landing site. 3. It is the third lunar exploration mission of Russia. And 4. The Chang'e 5 lunar spacecraft was launched on November 23, 2020.
Option A रही 2 and 4, B 3 only, C 4 only, D 1 only. यार correct answer हम B 3 only. जोड़ा कि होची it is the third lunar exploration mission of Russia. इटा रशिया रा मिशन नुह, इटा चाइना रा मिशन. सेथ में 3 होची incorrect. 57. Which country recently passed a law to make ethnic unity mandatory? Option A Tibet, B Vietnam, C Nepal, D Myanmar. Correct answer है A Tibet. 58. Which of the following countries is not a member of SHARC? Option A Bhutan, B Bangladesh, C Singapore, D Sri Lanka. यार correct answer है option C Singapore. 59. The 15th World Forestry Congress was held at dash. Option A Seoul, Korea, B Durban, South Africa, D Jakarta, Indonesia, एवं D Buenos Aires, Argentina. यार correct answer है A Seoul, Korea. 60. South Asia Economic Focus, a biannual economic report is published by dash. A Asian Development Bank, B IMF, C World Bank एवं D World Economic Forum. यार correct answer है C World Bank. 61. Minamata Convention is an international platform to discuss about dash. A mercury pollution, B air pollution, C soil pollution, D silicon pollution. Here correct answer है A mercury pollution. 62. Which of the following statement is not correct? A. Ukraine is the fourth largest country in Europe after Russia. Kyiv is the largest city in Ukraine. C. It shares its borders with Russia to east and northeast borders. D. It has coastline along the Sea of Azov. Here correct option होगा A. Ukraine is the fourth largest country in Europe after Russia. जोड़ा की होची incorrect. Ukraine is the second largest country after Russia in Europe. 63. According to Charitable Aid Foundation, which country topped World Giving Index 2021? A. Kenya, B. India, C. Indonesia, D. New Zealand. Here correct answer होगा C. Indonesia, who topped the World Giving Index 2021. 64. With which American scientist Professor Deepak Dhar shared the prestigious Boltzmann Medal in Statistical Physics for the year 2022? A. John Hopfield, B. Kenneth G. Wilson, C. Sam F. Edwards, D. Dan Frankel. Here correct option होगा A. John Hopfield. 65. Dharma Guardian military exercise is conducted between which of the following countries? Option A India and Bhutan, B India and USA, C India and Japan, D India and France. Here correct option होगा C India and Japan. धर्मा गार्डियन मिलिटरी एक्सरसाइज विषय आम बुक्स जो मैंने भी नहीं चाहते ओएस रो टेस्ट सीरीज बुक से धर्मा गार्डियन मिलिटरी एक्सरसाइज रो क्वेश्चन जीके रो जो आमर सेट गुड़ाक दि जाए लास्ट से गोटे क्वेश्चन पचराई जाइथिला एवं तार आंसर एक्सप्लेनेशन सहित दि जाइए जो मैंने भी बुक्स रो प्रिपेयर करथिबे से माने निहाती भाबे ए क्वेश्चन आंसर दे परिबे. 66. Which of the following is not a matched pair? Option A Gulab Singh Jammu, B Dulip Singh Punjab, C Shah Shuja Rohilkhand, D Wazir Ali Shah Awadh. एगुड़ा करे रूलर मानक ना और से जो स्थान को रूल करथिले तार जगार ना दिया जाइए कोटा करेक्टली मैच करूनी सेटा हवा आंसर और करेक्ट ऑप्शन हवा सी शाह शुजा रोहिलखंड से अजमेर रे जन्मग्रहण करथिले शाह शुजा एवं रोहिलखंड से रूल करूनथिले तो एटा हवा करेक्ट आंसर. 67. Which is not the matched pair? Option A Krishna Raja Wadayar Mysore, Nizamul Mulk, B Nizamul Mulk Asaf Jah Hyderabad, C Govind Chandra Kachar, D Jaman Shah Peshawar. या एगुड़ा करे भी रूलर मानक ना एवं से जो जगह रूल करथिले तार ना अछि तो करेक्टली मैच करूनी ऑप्शन सी गोविंद चंद्रा काचेर. काचेरटा होची आसाम रे गोटे जिला एवं गोविंद चंद्रा जे कि रूल करथिले उत्तर प्रदेश मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश जो अछि सेही स्थान रे से रूल करथिले एवं काचेर अछि आसाम रे तो एटा मैच पेयर हबो नाही. 68. Clause 43 the Charter Act of 1813 of the British Parliament concerned A. Law and order situation in India, B. Education in India, C. Foreign policy and trade relations in India, D. Initiation of Indian Renaissance. यार correct option होगा B. Education in India. 69. For colonial times in India, which of the following sequence is in proper order from the lowest to highest? A. Munsif's Court, Sadar Amin's Court, Jilla Court, Sadar Divani Adalat, B. Sadar Divani Adalat, Munsif's Court, Jilla Court, Sadar Amin's Court,
सी मुंसिफ्स कोर्ट जिला कोर्ट सदर अमीन्स कोर्ट सदर दीवानी अदालत डी सदर दीवानी अदालत सदर अमीन्स कोर्ट जिला कोर्ट मुंसिफ्स कोर्ट यार करेक्ट ऑप्शन हम ऑप्शन सी जोड़ा कि अच्छे मुंसिफ्स कोर्ट जोड़ा कि सब लोअर लेवल कोर्ट तापर जिला कोर्ट जोड़ा कि सदर अमीन्स कोर्ट अंडर रे आसे तापर सदर अमीन्स कोर्ट एवं सर्व ऊपर सदर दीवानी अदालत जोड़ा कि कंसीडर कराउतला एज सुप्रीम कोर्ट इन द colonial types of India. 70. Bhangi was a clan that ruled over a part of dash. Option A Dakhan, B Rohilkhand, C Kaveri Delta, D Punjab. यार आंसर हम डी पंजाब जोड़ा कि भांगी क्लान से रूल करुले अमृतसर रे जोड़ा कि पंजाब रो गोटे आंसर. 71. एकम सद विप्रह बहुधा वदंती comes from the A महाभारत, B रामायण, C वेदास, D ब्राह्मणास. जेहेतु एकम सद विप्रह बहुधा वदंती उपनिषद रो गोटे वाणी आछि तो एटार आंसर हम सी वेदास. 72. Deindustrialization was a result of option A an effort by colonial rulers to destroy India's economy, B India's industry not being able to adjust to modern industrial production, C lack of scientific and technical education in India, D India not having easy access to petroleum sources. यार correct answer हम an effort A an effort by the colonial rulers to destroy India's economy. 73. Which of the combination is correct? A. Mohandas Karamchand Gandhi was the editor of Pratap. Vinayak Damodar Savarkar founded the National Herald. Jawaharlal Nehru founded the Free India Society. Madan Mohan Malaviya was the chairman of Hindustan Times. Ganesh Shankar Vidyarthi wrote the Hind Swaraj. B. Mohandas Karamchand Gandhi wrote the Hind Swaraj. Vinayak Damodar Savarkar founded the Free India Society. Jawaharlal Nehru founded the National Herald. Madan Mohan Malaviya was the chairman of Hindustan Times. Ganesh Shankar Vidyarthi was the editor of Pratap. Mohandas Karamchand Gandhi wrote the Hind Swaraj. Vinayak Damodar Savarkar founded the Free India Society. Jawaharlal Nehru founded the National Herald. Madan Mohan Malaviya was the editor of Pratap. Ganesh Shankar Vidyarthi was the chairman of Hindustan Times. D. Mohandas Karamchand Gandhi wrote the Hind Swaraj. Vinayak Damodar Savarkar was the editor of Pratap. Jawaharlal Nehru founded the National Herald. Madan Mohan Malaviya was the chairman of the Hindustan Times. And Ganesh Shankar Vidyarthi founded the Free India Society. यार करेक्ट ऑप्शन हम ऑप्शन बी जोड़ा कि होचे मोहनदास करमचंद गांधी लिखी हिंद स्वराज. विनायक दामोदर सावरकर फाउंड करते फ्री इंडिया सोसाइटी. जवाहरलाल नेहरू फाउंड करते नेशनल हेराल्ड. मदन मोहन मालवीय थे चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स एवं गणेश शंकर विद्यार्थी थे एडिटर ऑफ द प्रताप. 74. विच रूलर वाज नोन एज बट शिकान? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर शाह मीर, सी सिकंदर लोधी एवं डी औरंगजेब. यार करेक्ट आंसर हम बी सिकंदर शाह मीर. 75. The 5 principles of Panchsheel are substantially a reiteration of option A the UN Charter, B the Charter of the League of Nations, C the Treaty of Berlin एवं D the Protocols of Zion. यार करेक्ट आंसर हम A the UN Charter. Panchsheel Agreement पंचशील एग्रीमेंट डेफिनेशन कौन थिला ई पंचशील एग्रीमेंट एवं यूएन चार्टर जेहेतु पीस एग्रीमेंट करे डिफरेंट नेशन गुड़ाक मध्य तेणु पंचशील एग्रीमेंट हूँ यूएन चार्टर गोटे अंश. 76. From which constitution Indian constitution borrowed the provision of single citizenship? Option A Australia, B Canada, C USSR, D British. यार करेक्ट ऑप्शन हो D British. 77. Who or which among the following has been given the power of Constitution of India to impose reasonable restrictions on fundamental rights? Option A President of India, B Parliament, C Supreme Court, D High Courts. यार करेक्ट ऑप्शन हो B Parliament. 78. Article 21A refers to option A right to freedom, B right to religion, C right to education, D right against exploitation. यार करेक्ट ऑप्शन हो C right to education. Which of the rights deals with right to vote and to be elected in India? Option A fundamental rights, B natural rights, C constitutional right एवं D legal right. C constitutional right is the correct answer जोड़ा कि आर्टिकल 326 रे देखा जाए. 80. Who or which of the following can abolish a state legislative council?
Option A Parliament, B Governor, C President, D State Assembly. Your correct option habo A Parliament. 81. Which of the following articles of Constitution of India refers to proportional representation by means of the single transferable vote? Option A Article 53, B Article 54, C Article 54A, D Article 55(3). Your correct option habo D Article 55(3). 82. In which year did the Constitution 99th Amendment Act came into force? Option A 2013, B 2014, C 2015, D 2016. Your correct option habo B 2014, जोड़ा कि थिला NJAC National Judicial Appointment Council, जोड़ा को कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करथिले एवं एबे भी जज मानको जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करबा को कॉलेजियम सिस्टम को ही फॉलो करा होचे, जोड़ा कि आगरु थिला सेटा एबे भी फॉलो करा होची। NJAC को सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करथिले काहे कि ना सेटा फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल स्ट्रक्चर अछि ताको कंपेयर करछि बोली सुप्रीम कोर्ट को लागिला, सेति पे से स्ट्राइक डाउन करथिले NJAC को। 83. Which of the following statements is not correct? A. The chairman of the UPSC shall be ineligible for further employment under Government of India or of any state. B. The member of the UPSC is eligible for appointment as chairman of the UPSC or chairman of any state commission. C. The chairman of a state commission shall be eligible for appointment as a member of or chairman of the UPSC or as chairman of any other state commission. D. A member of the state commission will be eligible for any other employment under the Government of India or of a state. यार C एवं D दुईटी जाको आंसर भले प्रतीत होची, किंतु मोस्ट प्रोबेबल जदि आंसर आमे खोजिबा तो C ऑप्शन टी मोस्ट प्रोबेबल हबो फॉर द करेक्ट आंसर। 84. Which of the following amendments has repealed Article 19(1)(f) and 31? Option A 42nd Amendment, B 43rd Amendment, C 44th Amendment, D 73rd Amendment. यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन C 44th Amendment. 85. Who among the following appoints Comptroller and Auditor General of India? Option A President, B Prime Minister, C Chief Justice of the Supreme Court, D Finance Minister of India. यार करेक्ट ऑप्शन हबो A President. 86. Which of the following has submitted right to information master key to good governance report? A Sarkaria Commission, B Ponchi Commission, C Administrative Reform Commission 1 एवं D Administrative Reform Commission 2. यार करेक्ट ऑप्शन हबो Administrative Reform Commission 2. 87. Which of the following commissions has identified 27 modes of corruption? A Bohra Committee, B Central Vigilance Commission, C Santhanam Committee एवं D Sarkaria Commission. यार करेक्ट आंसर हबो Central Vigilance Commission B. 88. How many members are in Finance Commission? Option A chairman and 2 other members, B a chairman and 3 other members, C a chairman and 4 other members, D a chairman and 5 other members. यार करेक्ट ऑप्शन हबो C a chairman and 4 other members. 89. Which of the following is the most effective means of citizens' control over administration? Option A public opinion, B election, C pressure groups, D advisory committee. यार करेक्ट ऑप्शन हबो B election. 90. How can a new all India service can be created? Article 249 रे रहिछि all India service. Option A होछि by a resolution of the Rajya Sabha, B by an order of the President, C by a resolution of the UPSC एवं D by an act of the Parliament. यार करेक्ट ऑप्शन हबो A by a resolution of the Rajya Sabha. 91. Which of the following committees laid down the British concept of civil service neutrality? Option A रहिछि Fulton Committee, B Masterman Committee, C Sapro Committee, D Northcote Travelling Committee. यार आंसर हबो ऑप्शन D Northcote Travelling Committee. 92. In which of the 5-year plans in India the concept of financial inclusion was included for the first time? Option A 8th, B 9th, C 10th, D 11th. यार करेक्ट ऑप्शन हबो 11th 5-year plan, ऑप्शन D. 93. Which of the following is accountable for the assessment of poverty? Option A HRD Ministry, B Ministry of Defence, C Niti Aayog, D Home Ministry. यार करेक्ट ऑप्शन हबो C Niti Aayog. 94. Who among the following had adopted the strategy of rolling plan? Option A Jawaharlal Nehru, B Rajiv Gandhi, C Narendra Modi, D Morarji Desai. यार करेक्ट आंसर हबो Morarji Desai जे के अडॉप्ट करथिले rolling plan. 95. Which of the list contains economic planning as a subject?
ऑप्शन ए कंकरेंट लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी यूनियन लिस्ट, डी स्पेशल लिस्ट। यार आंसर हम ऑप्शन ए कंकरेंट लिस्ट। 96 हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? ऑप्शन ए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन बी जस्टिस एम.एन. वेंकटचल्या, सी जस्टिस जे.एस. वर्मा, डी जस्टिस के.जी. बालकृष्ण। यार ऑप्शन ए हम करेक्ट। फर्स्ट ओडिया सीजेआई होचंते जस्टिस रंगनाथ मिश्रा एवं तांकर सुपुत्र जी भी जड़े सीजेआई थिले जस्टिस दीपक मिश्रा। 97 वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी पेरिस, सी लियोन, डी लंडन। यार करेक्ट आंसर हम ए गुरुग्राम। 98 which country hosted the virtual mode of the summit meeting of 20th Shanghai Cooperation Organization SCO in November 2021? Option A China, B Russia, C India, D Kazakhstan। यार correct answer होगा D Kazakhstan। What are the total membership countries of NATO? Option A 29, B 30, C 33, D 35। यार correct option होगा B 30। 100 Where is the headquarter of the NATO? A London, B Madrid, C Brussels, D Istanbul। यार करेक्ट ऑप्शन हम सी ब्रसेल्स बेल्जियम रे रही नाटोर हेडक्वार्टर। देखिए सहित आम आंसर की जोटा भी आपको प्रोवाइड करूँ एवं ता रिलेटेड इनफॉरमेशन एनालिसिस सब गुड़ाक आप देखिले। वीडियोटी जदि आपको भल लगे तेज निश्चय भाव लाइक करेंगे वीडियोटी को एवं आपण सहित जो मैंने भी एस एग्जाम एपियर कर भी सजेस्ट करेंगे आम वीडियो को देखा एवं आंसर कंपेयर करने को आम एनालिसिस को देखिए एवं निज आंसर केमती रही परफॉर्मेंस केमती रही से मेजर करेंगे। तो इतिक रोचे आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलें। नमस्कार।